USA, he called Prime Minister. After the incident. Sir, sorry. I am quoting yesterday's External Affairs Minister's speech in the Parliament. I quote. Sir, I would like to inform this House. I quote, Anurag, please. I am quoting your minister's stance. Sir, I would like to inform the House that on the 9th May, if there is any wrong in the court, it should be expunged from the record. Any wrong from the court, sir, it should be expunged. I am having official document. You continue. I am having official document. Continue. Sir, I quote. Sir, I would like to inform the House that on the 9th May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear, if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. That's correct. But the question is, where is your intelligence? American Vice President called Pakistani forces is going to attack. Still, Indian Monetary Fund is going to give the bailout for Pakistan, which was being controlled by America. IMF. Sir, International Monetary Fund. Sir, no. Sir, I am not yielding. Sir, I am not yielding. No. You talk to the chair. No, sir. Sir, these are all the confusions. Let us divide into two parts. Bahalgam incident took place. It is a complete, sir, intelligence failure. Intelligence failure means you must admit your incompetency of the administration. Yes. Incompetency of the administration. You are incompetent to rule this country. Yes. Our security is prime. People are having no faith upon you. Yes. Number two, first portion is over. Second portion, right? That happened. What was your diplomatic relations? You send all delegations. Sir, don't follow Nehruvian ideology. You will not. You can't. You are not competent. But please, follow at least your leader Atalji. What happened in the Kargil? Kargil war was conducted in a sensible manner with a collaborative measures. All stakeholders, including the oppositions, were taken into consideration Vajpayee. After the Kargil war, he appointed a commission, and the commission report was placed before the parliament. This parliament deliberated the commission. What is the don'ts and do's? What are the actions and inactions? Such a fair prime minister is your predecessor. Now you want to reap the legacy of the BJP, but you are completely concealing everything to the parliament. Parliament was completely set aside. 100 and odd people will is being reflected in this house, but you are avoiding the parliament. Are you a democrat? Am I not entitled to say you are a tyranny? I am not entitled to say you are a dictatorship. Sir, that is what I am telling. Please, I do not want to take more time. But only one thing. Sir, Bahalgam incident is the classic example for the administrative incompetency to deal terrorism. Operation Sindoor is nothing but an incomplete exercise ended with Trump's ceasefire. Just I wanted to show one thing, sir. Still I am confused. Today there are two newspapers. One says target met, no more ceasefire. Indian Express. One says Operation Sindoor is not over, only on pause. Sir, ceasefire was announced by the Prime Minister. That itself is a shock to the country. By Trump. But still you are saying this ceasefire is on pause. We will continue. One minister. Another minister says our target is over, so no more war. No parliament discussion. Prior to that, what is the result? Sir, please come. Last bit. Sir, I will go for the last one. At least hereafter,
You are fighting with, you are claiming that all the nations are with us, but Pakistan is getting membership and elected as vice chairman in the United Nations Security Council to avoid, to control the terrorism. Sir, you are claiming, are you not ashamed? Chief of Army has leader. Pakistani is getting the belt, United Nations councils to control the terrorism, and you are not. You want to label the Pakistan as the sponsor of the terrorism. Sir, please. Please conclude. Please. Please conclude. Hereafter, it is a sensible question. On behalf of DMK, I appeal to everyone, notwithstanding the political affinity, please compel this government and take this confidence of this government. Come for a democratic process. Discuss everything. Stop this nonsense in the future at least. Thank you, sir. Thank you. Honourable Member Sri E.T. Mohammad Basirji. Sir, thank you very much, sir, giving me this opportunity to speak in this very important session. Sir, as far as April 22 incident in Bhajalgal, the entire country I will look into. is worried Definitely, I will about look into. Don't worry. This chair is impartial. We all know This that. chair is impartial. Don't worry. killing of these 26 persons This chair is impartial. Don't to worry. remain as a wound. Sir, this incident of Bhajalgal, that can be called as a tragedy and considered in the deadliest of civil massacre in India since 2008 Mumbai attack. It was such an incident, my learned friends, they have narrated the entire thing in this. Sir, there are certain questions remaining unanswered. The first thing is with regard to the culprits. This morning, the Home Minister said certain thing. Let us hope that it is truth. Anyhow, that was a very, very difficult kind of question we were all asking. And now, there is some more questions to be asked. That is, how these terrorists managed to reach a tourist place like Pahalgam, that too at the mid time. We are claiming our efficiency, our technological know-how, and all kinds of things. In such a situation, what you have succeeded in that? What measures the police and the security personnel did for the safety of the tourists? That's a very important tourist center. What action they have taken to prevent this kind of a calamity? Similarly, sir, we have to strictly verify, threadbare analysis, whether we have intelligence lapse and security failure. There is no meaning in saying so many things. Ask your inner heart whether we have happened any lapse. If you ask whether there is lapse, I would like to say, yes, there is lapse on your part. You are replayable, you are bound to reply to the nation. Sir, government, we appeal the government to convene the meeting, special session of the parliament. You ignored that. Why? You could have convened that meeting, session, let the entire world know the truth. You had something to hide at that time. That was the reason you have refused our request to have this meeting. That happened in this. And even many eminent persons, they have said about the lapses in our activities. Sir, it is also to be examined that whether strategic planning was there. If it is true, if your claim are true, explain that. You have not explained that. You are just saying that everything is okay. That is your regular kind of thing. That is. And I would like to say with all the politeness, we must have an introspection. What is that? That is about international diplomacy of India. You are saying, sir, when you are speaking, you are saying, how bad is the situation? How bad is the situation in India now? Sir, we had a very good relation with many countries. Our international relation was best, sir, best in the world. We all know that as and when there was some crisis, even at the war, people were asking, people were waiting the voice for India. India had such a high regard. The whole world leaders
had very, very effective and very, very cordial relation with India. That was our this thing. And if you ask whether India is having the same status as on today, I would like to say that it is not there, it is diminishing like anything. You are responsible for that. You are talking about the prime ministers, Nehru, Gandhi, and all the kind of this. I would like to ask you, what is your moral right, even raising the voice here on their behalf? You have no any kind of moral responsibility. What was their position? What for they did? We have to realize. Now, we can see Gandhiji and Pandit Jawaharlal Nehru. He was mentioning about Gandhiji and Pandit Jawaharlal Nehru. See, I would like to ask you, are you believing in Gandhian philosophy? Gandhian philosophy, the main crux of the Gandhian philosophy is non-violence. You are motivating all kinds of violence within the country also. You have no moral right to speak about him also. Similarly, sir, Pandit Jawaharlal Nehru tenure, he was saying, you are also saying, sir, Pandit Jawaharlal Nehru, even Indira Gandhi, even you have, I think you have mentioned about our Vajpayee also. What was their performance, sir? What for they stood? We all know that Nehru was a key architect of non-aligned movement, advocating for peaceful coexistence and non-interference in the matters of our country. They believed in Panchashila. Sir, that 5 principle, what is that 5 principle? 5 principle of, that was a milestone also. That was what? Coexistence. Gandhi stood for that. Nehru stood for it. But what for you are standing? What for you are standing? You are standing to create confusion, unrest in this country and making capital out of it. You want to fish from the troubled water. So that is there. During Indira Gandhi, so during Indira Gandhi's tenure, there also we can very well understand that she was standing for the non-aligned movement. She had a position in the world. Whenever there is crisis in any country, they were waiting for the voice of Srimati Gandhi. That was the tradition of her. Similarly, sir, all these kind of things will really tell you that the position of Indian government today is quite contrary to the facts and the tradition of the other leaders which you all have mentioned. Sir, I would like to say a paradoxical situation also. What is that? India stood strongly with the government during this crisis. I was also one among the team, the delegation team with that. We went there. We explained. We are confident that we did our work assigned to us in a marvelous way. That was for India. Our voice was for India. But what is happening in this area? You realize we stand for peace. Our country's greatness and nobility is that only. What is happening? I conclude, sir. Now, I'm not going above the other subject. Now, what is happening, sir? When there is some trouble in the parliament, the noise in the parliament, members will say, sir, house is not in order. I am of the opinion that that same terminology will have to be repeated in all India level. House is not in order. It is to be made into order. Sir, what is happening here, sir? One single thing. What is happening, sir? Assam, what is happening? People are dying. They are going to be stateless persons. People are crying, sir. 45-degree heat. Open air, they are staying there. They have been evacuated. They have been forcibly removed. They are, Chief Minister there have given instruction to delete them the list. On what basis? They want to make these people stateless people, as Rohingya refugees. That is the thing. If this government is keeping silent, you will be doing a sin in this. We have to reopen. When you are talking about the cordiality and country's interest, you have to think this kind of thing, sir. I am going to conclude, sir. I urge upon the government to send a delegation of this house and make an inquiry in that. What is happening in Assam? That kind of situation you cannot repeat in this country, sir. This country is country for peace and prosperity. That you have made all kind of difficulties and hurdles and obstacles in before that, sir. I am concluding, sir. Proudness of India
Proudness of India is solidarity, sir. I am concluding, sir, with the one sentence. Proudness of India is our asset, our greatness. Before the world, we are saying ours is the biggest democracy. Please conclude. Unfortunately, as corrected by you and others, you have spoiled the entire thing, spoiled the image of the country. You have to correct yourself. I hope that wisdom will prevail upon you. With the few words, sir, I conclude. Thank you very much. Abdul Rashid, honorable member, Abdul Rashid. Yes. Please. Submission, please don't stop me for 10 to 12 minutes. For God's sake, I am from Kashmir. I am coming from Tihar jail. I know. Please. Thank you, sir. Please give me time. तो मैं कुछ अशार के साथ शुरू करूँगा अपनी बात. दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. मैं भी खायफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से. क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता. फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, कश्मीर में सब चेंज है, न्यू कश्मीर, नया कश्मीर. फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिन्नू को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो. इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता. तुमने सदियों लूटा हमारा सुकून, अब न चलेगा हम पे तुम्हारा फसून. चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता. ऑनरेबल चेयर सर, मेरे प्रॉफिट का फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया, उसने सारी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया. लिहाजा पहलगाम में जो भी हुआ वो पूरी इंसानियत का कत्ल था. जब कंडेमनेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं. कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं. मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, आज हर कोई कहता है कि वो मिलिटेंट कहां गए, एलजी साहब क्या कर रहे थे. मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट टेकिंग द साइड्स. आई कम फ्रॉम ए प्लेस which is situated at the LOC. जब बॉर्डर पे देखते हैं तो नजर आपकी तख्तियां इतना ऊपर बॉर्डर है, किसी को आना जाना हो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फौज शायद उतना कंट्रोल नहीं कर सकती है. इसी तरह जब आप एलजी को इल्जाम देते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम. आपकी पार्लियामेंट में तो बैठे बैठे 2 बंदे अंदर घुस आए नीचे से. कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे, आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे, उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे. लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की. आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए. आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को ये डिसाइड करना होगा. मैं कांग्रेस से गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ नेहरू जी के मुतालिक बड़ी बातें की गई. ऑफ कोर्स ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. सही कहा दुबे जी ने, बिल्कुल सही कहा. तो इसीलिए हम भी कहते हैं थिंग्स कंटिन्यूटी जो उन्होंने कमिटमेंटें की वो सीधे जहन में रखें. वो यूनाइटेड नेशन में मसला लेके गए, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे. देश आपको मिला 15 अगस्त 1947 को. फॉल्ट आपका है. जिन्ना साहब हूं, नेहरू साहब हूं, गांधी हूं, सरदार पटेल हूं, लियाकत अली खान हूं. आप इंडिया को यूनाइटेड नहीं रख सके. अपने देश के आपने बदकिस्मती से 3 हिस्से कर दिए. बांग्लादेश बनाया, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, और कश्मीरियों को क्या मार रहे हो. मेरा बाप 15 साल बाद पैदा हुआ, आपको आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या मार रहे हो. मैं पूछना चाहता हूं हमारा कसूर क्या है. मैं पूछना चाहता हूं हमारे खून का जवाब कौन देगा. आप कहते हैं वहां सब कुछ ठीक है. ठीक है, वहां सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते. लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं. मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं मिलिटेंसी खत्म करनी है. यहाँ हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है.
है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहाँ के हिंदुओं के पास है, वहाँ के मुसलमानों के पास है, वहाँ की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया देके यहाँ आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली गिलानी हुआ करता था, लेकिन वो भी 3 बार एमएलए रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो क्यों 3 बार संविधान की शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा अलगाववादी नेता बना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत जल्दी है, शौक से बनाओ, मजे से बनाओ अगर आपको लगता है, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को टच मत कीजिए, मेरे जम्मू कश्मीर के कल्चर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही रहने दीजिए। आज पाकिस्तान के साथ जो करना है करो, हमें क्या लेना देना? आपका उनसे झगड़ा, हम बीच में मारे जा रहे हैं। अब याद कीजिए, अभी यूनाइटेड सर प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज सर प्लीज मैं कहना चाहता हूं, मैं आज इनसे अपना टाइम मांगता हूं, 2-2 मिनट मुझे सारी पार्टियां दें। मैं ये कहना चाहता हूं, जब अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वुमेन्स राइट, मैं जेल में अखबार पढ़ के पता है, मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं, अभी तो मुझे उड़ी करना की बात करनी है, मुझे टाइम दीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब तालिबान को कंडेमनेशन करने की बात आई, तो यही हमारी सरकार जो यहाँ यूपी में कहते थे तालिबानी शासन यहाँ लाया जा रहा है, यू सपोर्टेड तालिबान देयर, यू एब्सटेंड फ्रॉम द वोट। आज इतने बुरे दिन क्यों आ गए कि आज आपको तालिबान की सपोर्ट लेनी पड़ती है? अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, पाकिस्तान को मुझे आज कुछ बातें जरूरी कहनी है, अगर आप कहने दें तो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जंग लड़ी गई, ये उड़ी में लड़ी गई, कुपवारा में लड़ी गई, करना में लड़ी गई, रजौरी पुलिस में लड़ी गई, आपके इलाकों में नहीं लड़ी गई। वहां पर कितने लोग मरे वो आपको पता है। मीडिया के लिए करना उड़ी बॉर्डर इलाके हेडलाइन तब बनते हैं जब वहां गोलियां चलती हैं, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। उन लोगों के लिए पैकेज चाहिए। गुरेज के लोगों से मोदी साहब ने कमिटमेंट की है 5-5 मरला जमीन उनको देंगे, वो 5 मरला जमीन आपको उन्हें देने पड़ेंगे। जस्ट 1 मिनट सर, आपने 60 MP, दिल जला हूं सर, दिल जला हूं, कुछ कहने दीजिए। आज के बाद शायद यहाँ नहीं आ पाऊंगा, कहां से 1.5 लाख रुपया रोज लाऊं? 60 MP आपने भेजे। सर आई एम कंक्लूडिंग, आप ही खुद प्लीज सर। 60 MP आपने बाहर के देशों में भेज दिए। पूछना चाहता हूं, उनमें कश्मीर के कितने MP थे? आपका तो एक जेल में, बाकी 2 उनके साथ आपका लव लेटर चलता है उमर साहब के साथ, उनमें कोई नहीं था। मैं आखिर पर लास्ट पे फिर ये गुजारिश करूंगा, स्टेटहुड की बात यहाँ आपने की कल, स्टेटहुड ही हमारा मामला नहीं है। यू विल हैव टू रिस्टोर ऑल दैट व्हाट यू हैव स्नेच्ड फ्रॉम अस एंड यू विल हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिसेस इन अकॉर्डेंस विद द हिस्ट्री। थैंक यू सर। मिस्टर केसी वेणुगोपाल जी। Thank you, Honorable Chairperson. For giving me this opportunity to speak on this important subject. Basically, the subject is regarding Pahalgam incidents followed by the Sindoor operations. But as like earlier, our treasury bench just make it as a discussion about Pandit Jawaharlal Nehru's period and Indira Gandhi period, like that. Discussion, why this discussion was being called? The discussion has been called to discuss about the Pahalgam incident. Of course, and the Operation Sindoor. Just like our colleagues, I also salute the brave soldiers of our country, those who are part of the Sindoor operations. But I totally wondered while hearing the speech of Honorable Home Minister Amit Shah ji. He is talking about many things. Yesterday onwards, my colleague Gaurav
started with a security failure issue. Everybody spoke from this side, repeated the same argument, but our Home Minister didn't touch a single word of security failure. Other than the security failure, he spoke everything. Sir, I was there in Srinagar that day as a part of Public Accounts Committee field visit. When I was sitting there, along with my colleagues, having an interaction with the Government of India officers, Chief Secretary of Jammu Kashmir was there in that meeting. Suddenly, he informed us something bad has happened, I need to allow to leave. We asked, he narrated this. That point of time, everybody feels that this issue was very minor. But within hours, that issue, which was one of the major, terrible terrorist attack news, has come out. Sir, just before that day, we were in Gulbarga. One of my, as a part of this PAC delegation, in that place, one of my DCC president came to meet me, who is staying only 2 kilometers away from Gulbarga. He invited me to go to the house. I'm ready to go to his house because he is the DCC president. But the security officers, they told me, we cannot allow you to go. Why? Any time. This is the word he used. Any time, anything can happen in this area. Sir, that was the situation in Jammu and Kashmir. Priyanka ji mentioned very rightly, who was the real culprit, basically? You only told Kashmir is very safe. Everybody come. Everybody went there, sir. But if you are calling them, if you are calling the tourists to visit Kashmir, is it your primary duty to make available security for them? Is it your primary duty? Sir, I took a strategy. Around 1 crore tourists went during that year period to Jammu Kashmir. Daily 1,000 to 2,000 people are going to this Basin Valley. Please think about it. If anywhere 50 persons are gathering, there will be a security surveillance, there will be a security cover. Here, thousands of people are going, that is in Kashmir. No security cover. Who is responsible? Amit Shah is speaking very loudly. Who is responsible? Basically, the terrorists are responsible for this incident. We agree. Pakistan is behind this thing. But who given this valuable 26 persons' life to this terrorist hand? Your ignorance given. Your ignorance given. Then you are talking about a Mumbai incident. Amit Shah ji, how can a minister lie like this, sir? Lie. His speech was completely lie. Baseless. He is talking about that in UPA period only terrorist attack happened. In the entire period, everything have peaceful, only except some Kashmir incident happened. I have statistics, sir. Sir, 23 December 2014, 23 December 2014, Assam violence. 85 people were killed. 28 December 2014, Bangalore bombing.
20 March 2015, Jammu attack, 6 people killed. 4-9 June 2015, Manipur ambition, and we cannot say about Manipur. In this country, Amit Shah is telling everything is safe. One state still burning. Now also it is burning. Yes. Shame. How shamelessly he is telling in our period everything is safe. This list is very long, sir. 18 September, 3 October, 6 October 2016, 29 November 2016, Nagorno attack, 7 March 2017, Bhopal Ujjain train bombing, 24 April, Sukma attack, 2017, Amarnath Yatra attack, 10 February 28, Sanjuvan attack, like 28 attacks. 28 attacks. Therefore, I think it is clearly a privilege, sir. You know that. Coming to the house and while replying, the Honorable Home Minister completely lying. Completely lying. In Kashmir also, we had statistics. They are telling about this Lieutenant Governor period only 608 incidents. 197 security persons were killed. Pahalgam is not at all an isolated incident. It was a continued incident. That's why we are asking, why don't you put sufficient security measures? Our Giriraj is sitting there. Whenever Priyanka ji is putting the names of the victims, he is talking about Hindu. Okay, they are Hindus. The design of the attack was very clear. The terrorist design of this attack was very clear. Asking the religion, asking the name, identifying the religion, and killing. This was first in the history of terrorist attack in this country. Why? Because the conspirators, the people behind, the country behind, their design is very clear, to divide the country in the name of religion. Their design is to divide the country in the name of religion. They are doing from outside. But Giriraj ji, you people are doing inside the same job. You people are doing the same job. When, sir, you see that social media, I think you also looked in the social media comments of those days. I mean, abusive language. How many attempts to divide this country, but this country stood together. I am along with Rahul ji, visited there, sir. The Kashmiri people, including Muslim people, are solidly stand with India. Sir, I am proudly say one moment, sir. One Ramachandran is a part of this. No, sir, I have to complete. Ramachandran is a part of these 26 people. I went with his daughter told me during that night, in my eyesight, my father had been killed. My 2 children were there along with me. I didn't know what to do. Darkness is there everywhere. In my eye. Because in front of me, my father thought that I don't know the place. I'm not familiar to that place. But finally, from that moment till next day morning, I got 2 brothers. I got 2 brothers from Kashmir. That 2 brothers from Muslim community. That is what the field told me.
That was the message of this country, sir. During this period, that was the message of this country. This country was united. Sir, no, sir. I would like to ask some questions, sir. Sir, now they are talking about yesterday, our External Affairs Minister is telling this President Trump and Modi ji didn't talk last for 2 months. Great discovery, sir. Sir, American Vice President talked to Prime Minister of India. American President, without the knowledge of President Trump, is speaking to Prime Minister of India. He alone? Sir, my point is ceasefire happened. Operation Sindoor. We also want to salute the soldiers. I told you in the beginning itself. Sir, on 10th May, 5:25 p.m. Sir, please note this. 5:25 p.m., Trump wrote in social media platform, after a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. This is Trump tweet. In a post text soon after 5:37 p.m., U.S. Secretary of State Marco Rubio echoed Trump and said 2 countries have agreed to an immediate ceasefire. Followed by, shortly after Rubio post, Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar confirmed that a ceasefire had indeed been agreed to. Only after that, around 6 p.m., our Foreign Secretary given a statement about ceasefire. If the ceasefire happened without the intervention of Trump, why don't India inform the country? Why don't India inform the country, sir? It is very clear. It is a clear intervention of third party, which has never happened in the history of Indian diplomacy. Sir, Trump told one more story. 5 fighter flights had been lost. When we are asking questions, Jainaji is telling, don't ask silly questions. This is a silly question. 5 jet flight Please conclude. is losing. Your leader sir. has to speak. 5 jet flight is losing, sir. Rahul Sir, our question, very sincere question. We want to believe you. Tell the truth to this country. Whether the jet flight had been lost or not. This is your duty to say that. Sir, but one thing I have to tell that. So very clearly, now External Affairs Minister yesterday is telling that all countries except 3 countries are given certificate to us. Sir, American also given. Please conclude now. Sir, I'm coming to conclusion. Sir, that part also exceeds the time exceeded. We know the timing exactly. No, time constraint is there for later. Sir, CENTCOM Chief General Michel Kurila praised Pakistan as a phenomenal partner in counter-terrorism. America, he is talking about America blacklisted organization. Yesterday he told about that. America telling that, sir, U.S. Secretary of State Marco Rubio met Pakistan Deputy PM Ishaq Dar and praised Pakistani partnership in countering terrorism and maintaining regional stability. Where is your foreign policy, sir? Their foreign policy, you made it as a public relation of your Prime Minister. There the fault happens, sir. Foreign policy is to deal diplomatically within countries, sir. Thank you. Instead of that, you made it as a partisan politics. You made it as a political thing. That's why this is happening. Sir, I think whenever we are asking question, I am concluding, sir. Whenever we are asking question, you are telling that you are questioning India. We are not questioning India, sir. We are very much proud of India, but we want to know that what mistake you people are done to down India. Thank you. This has to be tell in this house. We would like to know that. And you can blame Congress because one more thing. So only one more thing I'll tell. Rahul Gandhi
Yesterday, External Affairs Minister, only one last point. External Affairs Minister told yesterday Rahul Gandhi's speech about Chinese intervention. Last session he told very clearly. What he told, sir? You are to be very careful about joining China along with Pakistan to fight against. He told. Well taken, please. Then, yes, sir. Then the reply of the External Affairs Minister. That point of time, they locked down Rahul Gandhi. Yes. Then, when Rahul Gandhi raised that issue, that point of they locked down Rahul Gandhi. Please. But now, yesterday, External Affairs Minister is telling. Yesterday, External Affairs Minister is telling. Thank you. No, it was happened earlier also. Yes. This is the answer. So my point is that I think that the country deserved valid answers. Thank you. You are running away from the answer. Whenever questions raising, you are hiding on the truth. Of my party, the Shiromani Akali Dal. Thank you. I would like to start by condemning the racial and cowardly terrorist attack perpetrated by Pakistan in Pahalgam to fan communal hatred and destabilize our country. I also bow my head in condolence with all those innocents who tragically lost their lives on that day. The entire nation stood with those families and felt their pain. I also salute the valor of those brave hearts and those civilians who were the casualties during the course following these attacks. Sir, like the rest of the country, I too take great pride in saluting our armed forces with the precision and the valor that they showed in targeting Pakistan's military areas and neutralizing all that Pakistan was wanting to do, which is destroying their targets as well as their air bases and their radar systems. The restraint and the responsibility that they showed in this precise targeting showed India's military might to our neighbors and to the rest of the country, and I wholeheartedly congratulate our armed forces for this victory. Sir, throughout yesterday, I have been hearing both sides. Everybody over here spoke about their view of what this whole 72-hour episode was about. While the Treasury benches thumped their chest in victory, the opposition said that ye kya? In fact, not only showed their approval before me, a leader from the opposition party said, "Jang ruka kyun?" Sir, I am shocked to hear that in this house there are MPs who say, "Jang ruka kyun?" What were we here for? Were we here to fight and demolish Pakistan, or were we here to give them a befitting answer? Sir, jang रुका क्यों उनसे पूछिए जो लोग बॉर्डर में बसते हैं. आज इस हाउस में कितने लोगों ने ऑपोजिशन में, रूलिंग में या फिर सरकार में उन लोगों की बात किसने की जो बॉर्डर में बसते हैं? मेरे कश्मीर के भाइयों ने उनकी पीड़ा बताई और मैं पंजाब के लोगों की पीड़ा बताना चाहती हूँ जो उस बॉर्डर में बसते हैं, जहाँ दिन रात उनको इन बॉर्डर में रहने का उसका सामना करना पड़ता है. जिनके खेत उस तरफ थे उनको बोला गया आर्मी ने कि अपने फसल को काट दीजिए क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम बंद हो सकता है, तो फसल तैयार हो ना हो उसको काटना पड़ा. बेचारों को डर के मारे जब वो 3 दिन ऐसे वहां पे ब्लैकआउट हो रहे थे, ड्रोन चल रहे थे, फाइटर जेट्स चल रहे थे, लोगों ने डर के मारे अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने परिवारों को, अपनी चीजों को लेके कैसे वहां से उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा. और पाकिस्तान वाले जैसे कश्मीर में लगातार पूंछ में जैसे होता है, उन लोगों से पूछिए वो गरीब जो बॉर्डर में बैठते हैं और रोज इसको झेलते हैं, वो बॉर्डर के इलाकों के लोगों से पूछिए जो इसका निशाना बनते, जिस करके बॉर्डर में कभी कोई डेवलपमेंट नहीं होती, हमेशा बैकवर्ड होती है क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए सबसे आगे होती. सब मैं उनको ये भी कहना चाहूंगी जो कहते हैं जंग क्यों रुका, कि ये जंग इसलिए रुकना जरूरी था क्योंकि आपके और हमारे बेटे नहीं है जो उस बॉर्डर में रोज मरते हैं, आपके और हमारे घर नहीं है जहां पे बुलेट चलती है और जहां पे शेलिंग होती है. उन गरीबों के बारे में सोचिए जो इनका सामना करते हैं और इसलिए जंग को रोकना बहुत जरूरी था. सर, जब भी जंग होता है नुकसान लोगों का होता है. मैं ये जरूर मांगती हूँ कि ये बॉर्डर के लोगों का जो भरपाई होनी चाहिए वो कभी होती नहीं है, ना उनके टूटे हैं घर, ना उनकी सड़कें,
ना उनका फसल का नुकसान, कोई उनके बारे कोई बात करता नहीं। और मेरे पंजाब में जो ये समा चल रहा था, लोगों को 47 के काले दिन, 65 के, 75 के वॉर के, वो सारे काले दिन याद आने लग गए कि अब हमारे भविष्य में होगा क्या। और इस सारी चीजों में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सारी लेबर भी भाग गई, बिजनेस का भी सारी कैंसिलेशंस होने लगी, छोटे ट्रेडर्स जो भी हो, दुकानदार, सबका नुकसान हुआ। जब भी सर ऐसी कोई चीज होती है, सबसे पहले सरकार कहती है अटारी बॉर्डर बंद कर दो। भाई अटारी बॉर्डर बंद आप कर देते हैं, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और छोटे ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो जाता है। अब भी आपने कहा टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, लेकिन जो बड़े बड़े पोर्ट से बड़े बड़े उद्योगपति जो बिजनेस करते हैं, उनका तो 10 दिनों तक और चलता रहा। सर इसी कारण सर आई जस्ट स्टार्टेड, इसी तरह सर ड्रोन्स ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन न्यूट्रलाइजिंग दिस। लेकिन मेरे स्टेट पंजाब में पिछले 10 सालों से बॉर्डर के पार से ड्रोन आके आर्म्स, एम्यूनेशन, ड्रग्स लेके हमारे स्टेट में तबाही नहीं मचाई, लेकिन पूरे देश में अपने आर्म्स और अपने ड्रग्स फैला रहा है। यही आर्म्ड फोर्सेस इस बार न्यूट्रलाइज कर सके, कुछ नुकसान ना होए, तो फिर सर 10 सालों से क्यों उन ड्रोन्स को नहीं रोका जा रहा है? आपको हैरानी होगी, पिछले 6 महीनों में ही इस साल के बीएसएफ ने 130 ड्रोन, 135 किलो नारकोटिक्स एंड 79 वेपन सीज किए हैं। आप सोचिए कितने जो सीज नहीं हुए हैं और वो देश के कोने में जाके क्या हैवक क्रिएट कर रहे हैं। हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर का तो ये हाल हो गया है, डे लाइट रॉबरी, एक्सटॉर्शंस, मर्डर्स, गैंगस्टर्स आर रूलिंग पंजाब and the police and the state administration has totally failed, be it singers, be it sportsmen, be it politicians. Sir, हमारे पुलिस स्टेशन में ग्रेनेड से हमले हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से विजिलेंस के दफ्तर में हमले हो रहे हैं, और गैंगस्टर जेल में बैठ के सर 2 मिनट जेल में बैठ के टीवी के इंटरव्यू दे रहे हैं। ये पंजाब के हालात हैं। सर गोल्डन टेम्पल में भी 10 बारी धमकियां आ चुकी कि हम उड़ा देंगे। क्या सरकार को उधर की नाकाम है? आप ही कुछ कर दीजिए। और इसी तरह सब वेल यू कैन नॉट डिनाई कि देयर हैज बीन सिक्योरिटी लैप्स एंड दैट देयर हैज बीन इंटेलिजेंस फेलियर and our agencies were called napping, but responsibility must be fixed, sir. Otherwise, no one can stop this. Sir, मेरे last 2 points, sir. कैलाश मानसरोवर का 1 point, please conclude. शुरू कर सकते तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलिए। इंडिया पाक क्रिकेट टीम क्रिकेट मैच हो सकता है तो दलजीत दोसांझ की मूवी क्यों नहीं चल सकती है? आखिर में सर मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का अप्रिशिएट करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये वॉर रुका। सर लास्ट लाइन, मैं शुक्राना करती हूँ और हमारे लोग भी कि ये वॉर रुका, क्योंकि वॉर के साथ लोगों की जाने अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी प्लीज, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो यह है कि हमें अपनी देश की सेना पर गर्व है। उनके शौर्य, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, साहस, पराक्रम, वीरता और बलिदान को मेरा शत-शत नमन। हमारी सेना ने हमेशा मातृभूमि की रक्षा करी है और पूरी तरह समर्पित होकर करी है, और इस समर्पण के भाव को हम सदैव और इस समर्पण के भाव के लिए हम सदैव अपनी सेना के कृतज्ञ हैं और रहेंगे। सेना हमारा अभिमान भी है और सेना हमारा सम्मान भी है। सभी सैन्य बल और सुरक्षा बल जो वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बॉर्डर पर भारत के जिन नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और जो घायल हुए, उन सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। पहलगाम की जो आतंकवादी हमला जो 22 अप्रैल को हुआ, वह कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा पर आघात था। जहां एक तरफ सरकार यह कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है कश्मीर पे, तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी की कीमत पर कश्मीर में नॉर्मलसी का जो नैरेटिव
सेट करने की कोशिश करी। पहलगाम की घटना कहीं ना कहीं उसी का अंजाम भी है। हमारा सवाल सीधे सरकार से यह है कि आखिरकार यह घटना क्यों घटी। आखिरकार पहलगाम में बाइसान वैली में जहां हजारों टूरिस्ट रोज जा रहे थे अपने परिवारों के साथ, और मैं पूछना चाहूँगी सरकार से कि अगर आपके परिवार के या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कश्मीर जाता, घाटी में घूमने जाता, तो बिना सिक्योरिटी के क्या आप उन्हें भेज देते? बिना किसी सुरक्षा के आप उन्हें भेज देते? तो क्या एक भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? कहीं ना कहीं जो यह घटना घटी है, इसके लिए पूरी तरह से यह सरकार जिम्मेदार है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी पड़ेगी। और जिस समय घटना घटी तो भारत में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट्स JD वांस भी यहाँ मौजूद थे, और जब भी इस तरह के VIP गेस्ट भारत में होते हैं तो हमेशा कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ाई जाती है। लेकिन इस बार जो ये चूक हुई है, और यह खाली बरसान वैली की बात नहीं है, 60 और ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे जहाँ पे कोई भी सुरक्षा नहीं थी, और आपके कहने पर ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर ही टूरिस्ट कश्मीर जा रहा था, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि वह सुरक्षित है। और यह जिम्मेदारी अंतोगत इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा कि यह जिम्मेदारी टूर ऑपरेटर्स की थी वहाँ की सुरक्षा की, जो बहुत ही गैर जिम्मेदारा बयान है और साथ ही इनकी संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जहां भारतीय सेना ने सटीकता से पाकिस्तान और POK के अंदर 9 टेररिस्ट कैंप्स या आतंकी ढांचों को तबाह किया, को निशाना बनाया, और जब हमारा पल्ला भारी दिख रहा था तो ये सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ, बात ये नहीं है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, बात यह है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट किसने किया। किसी भी भारत के मंत्री ने या कोई भी भारत के ऑफिशियल हैंडल से यह अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया? भारत के देशवासियों को क्यों यह सूचना एक अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मिली? सवाल इस बात का है। सेम कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल है, और जो ये विश्व गुरु का जो माहौल बनाया जा रहा है देश में और पूरे संसार, पूरे विदेशों में, कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह फेल है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद और सीज फायर के तुरंत बाद IMF ने $1 बिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने $800 मिलियन देने का काम किया है। आई विल फिनिश इन 2 मिनट्स। वहीं UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। यह दर्शाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह विफल हुई है। और यही नहीं, पहली बार चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करने का न्योता मिला और लंच किया। और बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। आज जनरल माइकल कुरेला को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस्टिजियस निशान-ए-इम्तियाज अवार्ड भी दिया है। तो ये रिश्ता जो पाकिस्तान का और जो अमेरिका का है, और इन रिश्तों के बीच में भारत का खड़ा है, सवाल इस बात का है। सवाल ये भी है कि
कि अगर चीफ डिफेंस स्टाफ ने ये बात कही कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो लड़ाकू विमान तो गिनती के हैं, आज नहीं तो कल तो पता ही चल जाएगा कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। प्लीज मां। तो सरकार को क्या दिक्कत है बताने में? सर 2 मिनट्स कि प्लीज 1 मिनट, प्लीज कंक्लूड। ओनली 2 मिनट्स लास्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, और ये लड़ाकू विमान जो गिरे हैं ये क्यों गिरे, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह से, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार ये बात जानती ही नहीं थी कि जहां हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं वहीं दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश चीन, चाइना पूरी तरह से समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस को इग्नोर किया गया? प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी कि जो भारत का जो डिफेंस का बजट है, जो 1.9% ऑफ द जीडीपी है, इसको बढ़ाया जाए, इसको 3% किया जाए, और वहीं अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त किया जाए, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो आप लड़ाई हो रही है, जो वॉरफेयर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो जागरूक बने इसके प्रति। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Wait. Anupriya ji, 1 minute. Somebody wants to go to earlier. 1 minute. I will call you later. Next one. Subrayan, Mr. Subrayan. Yes, to. Speaker sir, கடந்த 11 ஆண்டுகால அனுபவங்கள் ஆட்சியாளர்கள் மக்களின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர்கள் அல்ல என்பதை தொடர்ந்து நிரூபித்து வருகிறது. அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த பஹல்காம் சம்பவத்திலேயும் ஆபரேஷன் சிந்தூரிலேயும் அவர்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் அவர் நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் அல்ல என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆர்டிகிள் 370 நீக்கப்பட்டதற்கு பின்னர் அந்த பகுதி முழுவதும் எந்தவிதமான பயங்கரவாதமோ தீவிரவாத தன்மைகளோ வெளிப்படவில்லை என்று சொல்லுவது எவ்வளவு பொய்யான, மக்களை ஏமாற்றுகிற வேலை என்பது பஹல்காம் சம்பவம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது. 26 பக்தர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு எது காரணம்? உளவுத்துறை முடமாக்கப்பட்டிருப்பதுதான் காரணம். உண்மையில் சத்திய மேவை ஜெயதே என்ற முழக்கத்திற்கு ஆட்சியாளர்கள் பொருத்தமானவர்கள் என்றால் உள்துறை அமைச்சர் ராஜினாமா செய்து வெளியேறி இருக்க வேண்டும். அதுதான் செய்திருக்க வேண்டிய வேலையாகும். ஆனால் அவர் செய்யவில்லை. இன்று காலையிலே கூட அவர் பேசுகிற தோரணை என்பதும் ஜனநாயகத்தை மிரட்டுவது மாதிரி தெரிகிறது. உள்துறை அமைச்சர் விளக்கமளிக்க வரவில்லை, விதண்டாவாதம் செய்யத்தான் வந்திருக்கிறார் என்பதை அவர் பேசுகிற தோரணைகள் முழுவதும் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றன. நாட்டு மக்களை காப்பாற்ற தகுதியற்ற ஆட்சிதான் இந்த ஆட்சி என்பது அவர்கள் சொல்லுகிற சொல்லிலேயே தெளிவாக புலன்படுகிறது. அதே மாதிரி எதிர்க்கட்சிகளில் பலவீனமானவர்கள் யார் என்று ஊடுருவி கண்டுபிடித்து அவர்களை வளைத்து போட்டுக் கொள்வதில் இருக்கிற அக்கறை நாட்டை காப்பாற்றுவதிலே இல்லை என்பதை நாம் தெளிவாக உணர முடிகிறது. அதேபோல் இப்பொழுது அயல்துறை அமைச்சரும் சரி, நம்முடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரும் சொல்லுகிறார்கள் எங்களை யாரும் இயக்கவில்லை என்று. ஆனால் 25 முறை ட்ரம்ப் சொன்னபோது ஏன் மறுக்கவில்லை? இன்று வரையிலும் பிரதமர் மோடி ஏன் வாய் திறக்கவில்லை? எதை கண்டு அஞ்சுகிறது இந்த அரசு? என்ன காரணம்? அமெரிக்க கொத்தடிமைகளாக இந்த ஆட்சியை மாற்றிவிட்டார்கள் என்று நான் குற்றம் சாட்ட விரும்புகிறேன். அதேபோல் பாகிஸ்தான் தீவிர முகாம்கள் தாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது பற்றி சில கேள்விகளை எதிர்க்கட்சிகள் கேட்டபோது எதிர்க்கட்சிகளின் தேசபக்தியையே சந்தேகத்திற்குரியதாக்குகிறார்கள். கேட்பதே பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாளர்கள் போல் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள். நான் கேட்க விரும்புகிறேன், இங்கே இருக்கிற இந்த ஆட்சியாளர்கள் அந்நிய காலனி ஆட்சிக்கு ஆதரவளித்துக் கொண்டிருந்த போது
அதை எதிர்த்து போராடியவர்கள் தான் காங்கிரஸ்காரர்களும் சரி, கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் சரி, திராவிட இயக்கங்களும். நீங்கள் அப்பொழுது தேசத்திற்கு எதிராக இருந்தீர்கள். இவர்கள் தேசத்துக்கு எதிராக இருந்தவர்கள் தேசபக்தியை பற்றி சொல்லுகிறார்கள். அதிலும் கொடுமை, மகாத்மா காந்தியடிகளை பற்றி, ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றி பேசுகிற தார்மீக தகுதி அவர்களுக்கு இல்லை. அவர்கள் தேசபக்தர்கள். 9 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு. இந்தியாவினுடைய உலக அரங்கில் இந்தியாவின் பெருமையை ஒளிவீசி செய்த அந்த ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றி இவர்கள் குத்தி காட்டுவது உள்நோக்கம் கொண்ட அரசியல் அவதூறு. அவற்றை நிராகரிக்கிறோம். நிறைவாக ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன். சீக்கிரம் முடிங்க. ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் பேசுகிறேன். தேசபக்தியை பற்றி இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இந்தியாவின் மீது சீனா ஆக்கிரமிப்பு செய்த போது அது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு என்ற நிலையிலேயும் அதை கண்டனம் செய்து தீர்மானம் போட்டு ஆதரித்த கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். Sri Gurmeet Singh Mate, please. 2 minutes. We are having 2 minutes. At most 3 minutes, please. धन्यवाद सभापति जी. सभापति जी, मैं सबसे पहले तो हमारी फौज पर हमें गर्व है और मैं नमन करता हूं कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. सभापति जी, कल रक्षा मंत्री जी के 1 घंटा और आज गृह मंत्री जी के 1.5 घंटा बोलने के बाद भी, लेकिन जो सरकार से सवाल है आज भी वो वहीं के वहीं है. सभापति जी, मैं पंजाब से हूँ और लोगों ने तो बहुत सी चीज़ें न्यूज़ पे देखी, व्हाट्सएप पे देखी, लेकिन किस तरह से ड्रोन आ रहे थे और किस तरह से ब्लैकआउट रात को किया जा रहा था, वो सायरन बज रहे थे, वो सब कुछ पंजाब के लोगों ने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया. कल राजा जी ने भी कहा, सवाल ये नहीं है कि विमान गिरा या ना गिरा, वो हमें अच्छी तरह पता है. सवाल ये है कि विमान क्यों गिरा. उसका कारण ये तो नहीं क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को हमले से पहले इतला कर दिया. अगर इतला कर दिया तो कहीं कारण ये तो नहीं जिस वजह से विमान गिरा. और दूसरा सवाल, सभापति जी, हमारे देश की एक परंपरा थी कि अगर किसी ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो जाता था तो माननीय मंत्री रिजाइन कर देते थे. लेकिन आप देखिए कि 26 लोगों की जान चली गई. इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर. रिजाइन तो दूर की बात, एक बार किसी ने माफी भी सरकार से नहीं मांगी कि हमारी वजह से 26 लोगों की जान चली गई. और तीसरा सबसे बड़ी बात, फॉरेन पॉलिसी का हमारा फेलियर. सभापति जी, हम पूरी दुनिया में कहते हैं और सदन में तो पता नहीं कितनी बार सुना है कि जी भारत विश्व गुरु बन गया. सभापति जी, कैसा विश्व गुरु. लड़ाई चल रही थी और IMF पाकिस्तान को $1 बिलियन दे रहा है. कैसे विश्व गुरु. पाकिस्तान के साथ चाइना ओपनली आ रहा है. हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने भी कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना के साथ, टर्की के साथ, और विश्व गुरु के साथ एक भी कंट्री स्पोर्ट में नहीं आ रहा. और कैसा विश्व गुरु के विश्व गुरु के रक्षा मंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने 27 बार कह दिया कि लड़ाई युद्ध हमने सीजफायर करवाया. और हमारे रक्षा मंत्री जी 1 घंटे के भाषण में एक बार भी विश्व गुरु के रक्षा मंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं ले सके. और आज ऐसा ही गृह मंत्री जी भी नहीं लड़ सके. सो सर,